Your lost tooth could be replaced with a smart implant. And every time you chewed, this implant would make its own electricity, which is used to charge itself. With that electricity, it powers Assalamualaikum ji, welcome to another DHS vlogs. Hope you guys are all doing fine and hope you are doing well wherever you are and whatever you are doing. So guys, I'm once again back with another high-tech video about the latest, one of the latest and the most astonishing discoveries right now in the last 1 year. I got to know about this a few days ago about a doctor who was working on this, and he was telling me about his great experience with these kind of things. So I thought, why not I make a video and tell you about what this is about, what is this technology, and what the people are doing right now. So guys, I am talking about a smart implant. Yes, a smart implant which can make its own electricity, cure your gums, and help to make your implant work for a lifetime without any bacterial growth. Keep watching the video for more information. Okay guys, I'm back again. As you know, there was a conference in Germany in which they displayed the latest smart implant in the IDS dental show. This implant, guys, it's groundbreaking thing. I mean, this is one of the most effective technology right now present in implantology. The most main thing about this technology is that you can get this implant in your mouth and it will recharge it whenever you will chew, whenever you will brush. It will recharge and it will source this mechanical pressure into electricity. This electricity will switch on the red LEDs which are in this implant, which will be present in your bone. You know, red light cures, we all know red light is everywhere. It is in physiotherapy, it is in all kind of facials and all kind of skin tightening procedures. Red light cures. So this red light will help bacteria to not grow at that places, and it will kill the bacteria and it will kill the infection, and it will help to make your plant to be more strengthful. It will have more retention in your bone, and this implant will go forever. Because you know, the main problem in all the people which do implants or which have experience in implants for last 10 years is that after 5 years your implants start to move. Patients complain about, because patients pay a lot of the for these implants, and when they start to get mobile and they start to move, they get they lose their trust in the doctor. So it is not because of the doctor, it is because of the bacterial infection which happens around the implant and in the gum tissue. So this implant will heal itself. The gums surrounding the implant will remain tight, and it will produce its own electricity whenever you will chew or whenever you will brush it. So guys, now you can see the video. The video will be displaying on your screen right now, and after the video I will tell you about what this technology does. Your lost tooth could be replaced with a smart implant. And every time you chewed, this implant would make its own electricity, which is used to charge itself. With that electricity, it powers a tiny light, which heals your gums. And the implant's surface is made up of tiny particles, which uses the electricity to push away bacteria so they can stick. It could even monitor the level of acid in your mouth, letting your dentist check up on you in real time. Okay guys, as you have seen this video, you can see that there are piezoelectric nanoparticles in this implant. Whenever they will get the force or whenever they will get the friction from your brushing, they will charge themselves and this red light will glow. Because all this technology surrounds around it circumferences around the problem of implants, which patients after 5 to 10 years they get complaints related to their retention and fixation of implants, that these implants start to move in the bone. So this is a great technology, and this is available now. They are sourcing it. Whoever wants it, he can get all the prototype, and they can pre-order it and order it online also, and they can get from their website also. So now for my Indians and Pakistani and Asian followers, अच्छा गाइज, ये एक नई टेक्नोलॉजी है. ये इसलिए बताना ज़रूरी है आप सबको कि ये अब अवेलेबल है हर जगह.
और आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं डॉक्टर्स, और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये एक इम्प्लांट है बेसिकली। इस इम्प्लांट के अंदर एक छोटे-छोटे उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जो जब आप खाना खाते हैं, प्रेस होता है या ब्रश करते हैं, तो दीज पार्टिकल दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये इतनी बिजली बनाते हैं जिससे आपके इम्प्लांट के अंदर जो रेड लाइट है ना, क्यूरिंग लाइट, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेड लाइट हर जगह है। आप हाइड्रोफेशियल कराते हैं तो रेड लाइट आपके मास्क में लगाई जाती है ताकि फेस की स्किन हील हो सके। इन ऑल काइंड ऑफ फिजियोथेरेपीज दे यूज रेड लाइट। तो ये रेड लाइट बेसिकली आपके मसूड़े को टाइट करती है, सख्त करती है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, आपका इम्प्लांट ना हिले, ताकि आपने पैसे जो खर्च किए हैं वो ना हो। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि राइट नाउ बहुत से लोग इम्प्लांट कराते हैं, और इम्प्लांट करवाना ज़रूरी होता है मिसिंग दांत के लिए। तो ऑब्वियसली एक ऐसा इम्प्लांट जो फॉर एवर चल सके और कोई 20, 25, 30 साल चल सके, तो ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है। और ये इम्प्लांट अवेलेबल है, और ये जो डॉक्टर साहब है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के, इन्होंने ये जर्मनी में, कोलोन जर्मनी में, इन्होंने ये पूरी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन और अपना एक डेस्क लगाया है, जिसपे उन्होंने अपने इस इम्प्लांट के बारे में बताया कि मैंने रिसर्च की है, और डॉक्टर साहब की इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड भी थी, इसलिए ये इम्प्लांट ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो इससे ये नहीं है कि सिर्फ जैपनीज़ ही सारा कुछ कर रहे हैं, अब अमेरिकन भी इसी लाइन में है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। जैपनीज़ तो हर किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राइट नाउ मुझे एक और न्यूज़ भी मिली है और इस पर रिसर्च भी की है कि जैपनीज़ ह्यूमन ऑर्गन्स, इंसानों के अज़ा जो हैं वो जानवरों में उगा के ह्यूमन ट्रांसप्लांट जो करते हैं, किडनीज, हार्ट, उसके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हमें किसी डोनर की ज़रूरत ना पड़े, किसी का दिल, गुर्दे या किसी का कोई ऑर्गन लेने की ज़रूरत ना पड़े, हमें वहीं से हम उगा लें उस जानवर के अंदर इंसान की किडनी और हार्ट, और उसको ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ करें। तो बहुत कुछ है बताने को, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग DHS Vlogs. Dr. Hassan Shafiq will come again with another video. Keep watching. Allah Hafiz.